ये तो मैं मेटल्स पर भी आपकी राय लेना चाहूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि एक मजबूत बाउंस बैक जरूर देखा गया है, लेकिन अब ये थम सकता है, तो ऐसी स्थिति में मेटल स्टॉक्स में जो एक बिग आउट परफॉर्मेंस दिखी बीते 2 महीने में, क्या आपको लगता है कि वो ओवरडन हो चुकी है? नियर टर्म के लिए वो ह्यूज आउट परफॉर्मेंस दैट यू हैव सीन इज ओवरडन. That's what our thought process is. See, whether metals may be at the end of the day, the major problem why metals or all commodities underperform किया, क्योंकि there has been more supply than demand which actually pushed down the prices. So it is estimated that थोड़ा capacities बंद होएगा, and because the capacities बंद होएगा तो supply कम होएगा, so the pricing pressure that was there, that will get removed. So that is only one part. Second part is then you have to see a demand increasing from those levels. So the next rally, according to me, will actually start to happen when you start to see a demand increase beginning to happen. That's the place, that's probably the time when we need to look at how the entire rally in commodities will happen. And that's also will be the time when the global growth story beginning to drive the markets yet again. देवेन, आपने अभी हाल ही में जो इश्यूज आए, इसमें कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं किया। दोनों कंपनी देखी थी, इक्विटास और थायरोकेयर, दोनों कंपनी देखी है, बट उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया भी, क्योंकि एक तो आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की मजा नहीं आ रही है। आई थिंक वेरी फ्रैक्शन अलॉटमेंट यू गेट, बट दैट डिसाइड्स द पॉइंट. I think both the companies are having interesting business model, and from a perspective of long-term investment, I think they suggest lot of positivity. I'm not too sure कि valuation के हिसाब से immediately opportunity encash कर सकते हैं, मैं नहीं मान सकता हूँ अभी, but maybe I think market gives opportunity after listing, so I think वहाँ पे हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं. But both these companies to me I think remain interesting from long-term investment perspectives. जी, इनफैक्ट श्री, पूरी ही एनबीएफसी स्पेस पर अभी आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी ज़्यादा स्टॉक्स में दिखी है, जो अर्निंग्स आए हैं क्वार्टर 4 की वो भी काफ़ी स्ट्रांग रही हैं, और हाल ही में काफ़ी सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी आई हैं कि क्योंकि जो बैंक्स उन पर बैड लोन एक बड़ा कंसर्न बन गया है, जिसकी वजह से जो उनकी एपेटाइट है रूरल एरियाज में लैंड करने की वो काफ़ी कम होगी, और उस केस में जो बेनिफिशियरी बन रहे हैं वो एनबीएफसीज बन रहे हैं. क्या आप इस व्यू से सहमत हैं? और अगर हाँ, तो क्या हाउस एनबीएफसीज में आप रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट जो एमर्ज हुआ सस्टेन होता हुआ देख रहे हैं? कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं इस पूरी स्पेस से? सी, हम एक एनबीएफसीज करके एक जेनेरिक नाम लेते हैं, बट आई थिंक वी नीड टू लुक एट कंपनीज स्पेसिफिक टू certain regions, specific to certain types of businesses. Shriram Transport Finance ka business will be quite different from that of a Mahindra Finance, and I am sure that will be different from the Cholamandalam, or that will be different from Sundaram. So everybody has got their strengths and weaknesses. Let's look at Mahindra Finance. Probably it has had a huge impact on 2 bad monsoons on its performance, plus when you move from 150 days etc. to 120 to 90 days, kitna in recognition of NPA, what is going to be the NPA levels, stress level increase. And I think last quarter performance of Mahindra Finance probably indicated that the worst is already over for that firm. So now in the last budget you have seen a lot more of rural thrust. Rural thrust, in fact, if it is there, probably 6 months down the line, the benefits of all those rural trusts will have to be seen, which effectively means growth in terms of an AUM, plus a lot of improvement in the asset quality, or at least some improvement in the asset quality. We are assuming that this monsoon is going to be better. That's the first assumption that we are making. If that happens to be the case, then things will turn out to be improved for the NBFCs. And now here comes the microfinance companies playing the role. Banks का completely a different story. Banks का main NPA is coming from infrastructure plus various other related, especially corporates. NBFCs wouldn't be lending to the corporates to that extent, many of these people, and it will be not to the large corporates or infrastructure. It will be much more of a different manner. So I think we need to look at it from a 2 different angle. रिटेल वर्सेस कॉर्पोरेट. देवेन, शुगर स्टॉक्स में आपकी सलाह की आज भी खबर आई है, महाराष्ट्र सरकार अब नए सिरे से स्टॉक लिमिट जारी करने जा रही है, और इस स्पेस में न्यूज़ फ्लो एटलीस्ट सपोर्टिव तो रहा है, जिसके चलते हमने मोमेंटम भी देखा है.
शुगर में आपका व्यू क्या है देवेन? एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आई थिंक थोड़ा एक माहौल बदला है ब्राज़ील के हिसाब से, तो वहाँ पे थोड़े शुगर के दाम फर्म हो रहे हैं एंड उसके हिसाब से जो कंपनीज के पास, इंडियन कंपनीज के पास गोडाउन स्टॉक है, उनके लिए एक्सपोर्ट रिलेटेड आई थिंक इनकम का एक अच्छा आई थिंक एक माहौल बन रहा है. डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ नॉट कैलकुलेटेबल बिकॉज आई थिंक कितनी कंपनी के पास क्या क्या स्टॉक है दैट इजीली नॉट अवेलेबल. बट एक चीज़ है कि आई थिंक इफ द शुगर प्राइसेज आर इम्प्रूविंग देन प्रॉब्ली आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर मैनी ऑफ द शुगर कंपनीज. दूसरी तरफ इंडियन कंपनीज को देखें तो ये साल के अंदर आई थिंक शायद शुगर किन का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है क्रशिंग के हिसाब से. तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बेसिकली आई थिंक इट विल हैव द इम्पैक्ट ऑन द नेक्स्ट शुगर ईयर वेरी आई थिंक शुगर स्टॉक वुड बी लेस इन द गोडाउन एंड आई थिंक प्राइसेज विल गो अप. So maybe it's more of a demand supply situation I think for which the prices are likely to firm up in sugar space and I think the space would remain good. However companies को देखें तो यूपी के अंदर जो कंपनी है, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो कंपनी है, वहाँ पे अभी भी बैलेंस शीट के इश्यूज काफ़ी हद तक है, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है. सदर्न कंपनीज के अंदर कॉन्फिडेंस रिलेटिवली बेटर मिलता है आई थिंक वेयर दे हैव गॉट अ लार्जर अमाउंट ऑफ क्रशिंग सीजन एंड एट द सेम टाइम आई थिंक रिलेटिवली डिसिप्लिन बैलेंस शीट. So likes of EID Perry would be I think a better choice within the sugar space as far as I am concerned. जी